गुड आफ्टरनून। चलो क्लास स्टार्ट करते हैं। जेनेटिक्स पढ़ रहे थे हम लोग, ठीक है। और जेनेटिक्स में क्रॉसेस डिस्कस कर रहे थे। क्रॉसेस, ठीक है। हमने मोनो हाइब्रिड क्रॉस किया, हाइब्रिड। देन वी टॉक्ड अबाउट द डाई हाइब्रिड क्रॉस। Now we will talk about the back cross. Third is the back cross. बैक क्रॉस, बैक क्रॉस के दो टाइप्स हम लोगों ने पढ़े थे। वन इज द आउट क्रॉस एंड द अनदर वन इज द टेस्ट क्रॉस। टिपिकल जेनेटिक क्रॉस, टिपिकल genetic cross. Parents, right? The parents are defined as homozygous or pure. Homozygous, pure. Capital T cross with small t, small t. Then the F1 generation. F1 generation is produced by this cross. इससे क्या बन जाएगा? Capital T, small t, individual. Then the F2 generation. F2 generation, as we studied, it is produced by selfing. Capital T, small t cross with capital T, small t. Right. Generation produced by this such a kind of cross is known as, इस तरह के क्रॉस से जो जनरेशन बनेगी उसे हम क्या बोल देते हैं? दी F2 जनरेशन. कैपिटल टी, टू ऑर्गेनिज्म कैपिटल T स्मॉल t and small t small t. Now this is a typical genetic cross. Now back cross. बैक क्रॉस में आउट क्रॉस, a cross between the hybrid and the dominant parent, homozygous dominant parent. Hybrid crossed with dominant homozygous dominant individual. Now this kind of cross is known as out cross. Right. Now see, in this cross what will happen? First, let us try to observe this. Now in this cross, small t organism was also formed. Right. The recessive trait appeared. This cross में even the recessive trait appeared. Recessive trait appeared. Now let us suppose you want to eliminate this kind of phenotype. This individual will be dwarf, but you want to eliminate this kind of trait from the population. So instead of choosing this individual to be crossed with this, you choose such kind of individual. कैपिटल टी स्मॉल टी का क्रॉस अगर आप कैपिटल टी के साथ करवाते हो, इससे गेमीट कौन सा बनेगा? कैपिटल टी काइंड का. इससे कैसे बने? दो तरह के, कैपिटल टी टाइप का गेमीट और स्मॉल टी टाइप का गेमीट, क्योंकि गेमीट हैप्लॉइड्स होते हैं. If this gamete fuses with this gamete, capital T is produced, and in this case capital T small t is produced.
Both are tall. Both are tall. So from the population, this trait can be eliminated. Outcross is performed to increase the quality of the herd or quality of the population. Outcross, it is performed. क्रॉस क्यों किया जाता है? It is performed to increase the quality of herd if you are talking about the animals or the population. इस क्रॉस में कोई रिसेसिव इंडिविजुअल बना ही नहीं, ठीक है? तो इस तरह के क्रॉस को हम क्या बोलते हैं? टेस्ट क्रॉस, आउट क्रॉस, राइट? टेस्ट क्रॉस, टेस्ट क्रॉस is a cross, capital T small t, a cross between hybrid and homozygous recessive individual. Now see, when this happens, this kind of gamete is produced by this organism, capital T small t, ये होता है. अब अगर इनका क्रॉस देखो, this gamete fused with this, क्या बना? Fusion of this produced capital T small t. The fusion of this would produce small t small t. Right. Now this would tell us whether this organism is heterozygous or homozygous. इसका phenotype कैसा है? Its phenotype is tall. It is expressing the dominant trait. But ये जो tall individual है, ये तो दो तरह के होते हैं. Tall could be capital T small t और capital T. तो आपको ये कैसे पता चलेगा कि ये heterozygous है या homozygous है? ये देखने के लिए हम क्या करते होते हैं? हम इसका homozygous recessive individual के साथ क्रॉस लगाते हैं. Now let us suppose this individual was capital T. ये इस तरह से, अगर ये इस तरह का होता तो ये जो क्रॉस होता उसमें एक ही तरह के ऑर्गेनिजम्स आते, टॉल ही आते. अगर एक ही तरह के ऑर्गेनिजम्स आए तो इसका मतलब क्या है? ये कैसा है? प्योर. लेकिन अगर दो तरह के ऑर्गेनिजम्स आए तो इसका मतलब क्या है? इसमें एक एलील डिफरेंट है, मतलब ये कैसा है? हेटेरोजाइगस. तो टेस्ट क्रॉस जो है बेसिकली इट इज डन टू नो द जीनोटाइप ऑफ an organism showing the dominant phenotype. I'm moving on to the next page now. Test cross. Its use. It is to know the unknown genotype. Unknown genotype of organism expressing the dominant phenotype. Organism dominant phenotype show कर रहा है, ठीक है? Organism is expressing the dominant phenotype, and you want to know whether this organism is heterozygous or homozygous. Capital T cross with small t, all tall. Hence this is pure.
capital T small t crossed with small t small t. Two types of organisms, capital T small t, small t small t. 1:1 की ratio आ जाती है. One tall, one dwarf, which means this organism is hybrid. Hence this is hybrid. से टेस्ट क्रॉस परफॉर्म किया जाता है. ये होता है टेस्ट क्रॉस. This is about these crosses. Now, there is another cross known as reciprocal cross. Reciprocal cross. Reciprocal cross is basically a cross related to another cross. Now, let us suppose there's a male and there's a female. Right? This male is, let us suppose, capital D, capital D. This one is small d, small d. It produced capital D, small d. It expressed the phenotype of D. इसका रेसिप्रोकल क्रॉस जो होगा उसमें आप मेल फीमेल के कैरेक्टरिस्टिक्स बदल दो. Now the female would be capital D, small d, small d. Capital D, small d बनेगा. Right. Now it should also express the same kind of phenotype. अभी क्रॉस हमने किया क्यों? Right. The purpose. ये तो दो क्रॉसेस हैं जो एक दूसरे के ऑपोजिट हैं. This is one cross. This is another. These are reciprocal of each other. Right. We'll try to understand why we perform this kind of cross. Moving on to the next page now. Sorry. When we were studying reproduction chapter, right, reproduction in organisms, we talked about inheritance. Even there also. And we discussed that inheritance is of two types. One is the nuclear inheritance, which is due to the genes or the genetic material within the nucleus. Then there is another type of inheritance which is known as cytoplasmic inheritance. This cytoplasmic inheritance is due to cell organelles, genes in the cell organelles. Like for example, genes in the mitochondria and genes in the plastids or chloroplasts in case of the plants. Chloroplast. Right. Now, the cytoplasmic inheritance is also known as maternal inheritance. This is also known as maternal inheritance or maternal influence. Maternal inheritance or the influence of the mother. Maternal influence भी कहते हैं इसे. अब ये हो सकता है कि हमने जो कैरेक्टर चूज किया, हम एक एग्जांपल ले लेते हैं. The coiling in shells of snails the snails show right-handed coiling
and left-handed coiling, right-handed coiling और left-handed coiling, ये दो तरह की coiling देखने को मिलती है। अब राइट-हैंडेड coiling का मतलब क्या हुआ? जो शंख है उसका जो ग्रूव है वो इस तरह से, मतलब यहां से कैनाल है, यहां से कैनाल इस तरह से आगे को घूम रही है। मतलब इट्स लाइक क्लॉकवाइज, ये यहां से ऐसे और फिर ऐसे, इस तरह से। इसमें कैनाल है जो यूं इस तरह से गोल 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 घूमती होती है। ठीक है, इस तरह की कॉइलिंग को आप क्या कह देते हो? दिस इज राइट हैंडेड कॉइलिंग। और अगर ये कॉइलिंग ऑपोजिट डायरेक्शन में हो, ठीक है, ऐसे, ये इस तरह से, ये दो तरह की कॉइलिंग देखने को मिलती है। And this coiling is influenced by mitochondrial genes. मदर से इन्फ्लुएंस होता है, राइट? सो इफ द फीमेल, if the female is capital D, then only the coiling is right-handed, right-handed और dextral, dextral। ठीक है, अभी जो हमने क्रॉस किया, उस क्रॉस को अगर हम दोबारा देखें, मेल फीमेल, the female is capital D, the male is small d, small d. In this case, all the members of this progeny, सारे offsprings, इनमें कॉइलिंग कैसी होगी? डेक्स्ट्रल। बट अगर आप इसका रिवर्स कर दो, कैपिटल डी मेल क्रॉस्ड विद स्मॉल डी फीमेल, राइट? नो डेक्स्ट्रल कॉइलिंग। अब डेक्स्ट्रल कॉइलिंग नहीं है। तो ये डिटरमाइन करने के लिए कि साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस तो नहीं है, राइट? टू डिटरमाइन whether the trait is influenced by cytoplasmic inheritance, we perform a reciprocal process, right? So reciprocal process to determine the influence of maternal genes. So now these are the genetic process which we have to study. ठीक है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस, इसी तरह से ट्राई हाइब्रिड, टेट्रा हाइब्रिड, ये आगे से आगे होते जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा बैक क्रॉस में आउट क्रॉस और टेस्ट क्रॉस, एंड देन रेसिप्रोकल प्रोसेस। This is the basic understanding of the process. Now we start with mendelism. Mendel is a very prominent person in the study of genetics. He is known as father of genetics.
Mendelism. Mendelism means the concepts related to Mendel, to Mendel, or the inheritance patterns, patterns given by Mendel. जिसे हम मेंडेलियन इनहेरिटेंस भी बोल देते हैं, given by Mendel. Mendelian inheritance. Mendel was a mathematician. Mendel का नाम क्या है? Mendel Gregor is a title. Johann Mendel. Gregor is a title. जैसे आप सर मैम बोलते हो उस तरह से Gregor is a title. His name is Johann Mendel. He was born on 20th July 1822. The birth of the Mendel. He was an Austrian. He was an Austrian by citizenship. Born in, मेंटल के बारे में अपने को कुछ चीजें पढ़नी होती है. Born in Heisendorf, Heisendorf, Heisendorf village of Sicilian province. Sicilian province. This is the name of the village. Sicilian province in Austria. In Austria. He was a mathematician. He was not a biologist. He was a mathematician. He was working on he was working on plant hybridization. Working on plant hybridization. अब आप लोगों से मैथमेटिशियन था, तो ये प्लांट हाइब्रिडाइजेशन पे क्यों काम कर रहा है? To generate experimental proof or to obtain experimental proof for the laws of probability. Laws of probability. The laws of probability प्रूव करने की कोशिश कर रहा था, राइट? और इसलिए इसने सब्जेक्ट की तरह प्लांट हाइब्रिडाइजेशन चूज किया, राइट? He gave principles of inheritance. He gave principles of inheritance.
He worked upon a plant, Pisum sativum, garden pea. He worked upon garden pea. It's not sweet pea, it's not cow pea, it is garden pea. Garden pea. इसका साइंटिफिक नेम होता है Pisum sativum. PISUM. Pisum sativum. Pisum sativum पे काम किया इसने. I'll move to the next page. He was working on plant hybridization. ये सारे के सारे previous year क्वेश्चन हैं. इस पे क्वेश्चन नहीं आएगा. सिसिलियन प्रोविंस पे बुक्स में क्वेश्चन मिलता है, ठीक है. बट हेजेंडॉर्फ विलेज, डेट ऑफ बर्थ, he was an Austrian, born in Austria. Plant hybridization. He was trying to prove laws of probability, principles of inheritance, and then this plant, garden pea. Nice, right? Next page. Mendel worked on pea plant for 7 years. How many years? 7 years. (1856 to 1865). और सर ये तो 9 years होते हैं. The first 2 years, he was trying to obtain pure plants. His work started with process. He worked for 7 years. Total years 1856 to 1865. अगर आपको years में पूछा जाए तो कब से कब तक, right? His work was published in the annual journal. The journals are basically reportings of new findings. Annual journal of Society of Natural History. ये ऑर्गेनाइजेशन का नाम, सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री ऑफ ब्रून. ये जगह का नाम जहां पर ये नेचुरल सोसाइटी है. ब्रून इज इन जर्मनी. एनुअल जर्नल इज द बुक जिसमें इसका काम पब्लिश हुआ. किसका एनुअल जर्नल? एनुअल मीन्स जो हर साल छपता है. ऑफ सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री. दिस सोसाइटी, राइट. और ये सोसाइटी कहाँ बेस्ड है? ब्रून. His work was published in Annual Journal of Society of Natural History of Brunn in 1865. In 1865 में published हुआ. But his work was rejected. His work was rejected due to mathematical approach. People in those times were highly focused upon their lines, their subjects. इसने जो कुछ समझाया था उसमें बहुत सारी मैथमेटिक्स थी. और जिन लोगों ने पढ़ना था, तो पीपल ऑफ नेचुरल हिस्ट्री कह लीजिए या बायोलॉजी कह लीजिए, उनको इसकी बातें समझ में ही नहीं आई, इसलिए इसका काम रिजेक्ट हो गया. His work was rediscovered
his work was rediscovered by three people. By एक का नाम था कार्ल कोरेंस, CARL, कार्ल कोरेंस. He was from Germany. Karl Korenz from Germany. Hugo de Ries, जिसने म्यूटेशन डिस्कवर किया. Hugo de Ries. डी साइलेंट होता है, Hugo de Ries बोलते हैं. Hugo de Ries of Holland. And von Schmark, ESCHMARK, von Schmark. He was an Austrian. इसे गांव का ही था, वैसे याद किया जा सकता है. Austrian. Von Schmark. Right. Now of these, the Karl Korenz, this person, Karl Korenz, he formulated the laws of inheritance. Laws of inheritance, जिसे मेंडेलियन लॉज ऑफ इनहेरिटेंस भी कहा जाता है. इसने प्रिंसिपल्स को लॉज में कन्वर्ट किया. लॉज ऑफ इनहेरिटेंस और मेंडेलियन लॉज. मेंडेलियन लॉज वर नॉट गिवन बाय मेंडल. हु गेव मेंडेलियन लॉज? कार्ल कोरेंस. ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है. कार्ल कोरेंस formulated the Mendelian laws. He was a person who formulated this. Now these three people, they rediscovered his work, right? And again brought his work to the world. And because of the effort of these people, these noble men, today Mendel is known as father of genetics.